Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sri Chandra's distance learning program. Dear intermediate second year students, we were dealing with the topic Durusun min al-Quran al-Kareem, lessons from the glorious Quran. We had come across Suratul Quraysh, Suratul uh, Suratul Ma'un, and Suratul Nas, Suratul Falaq. 4 surahs we had learned. And we had learned about the summary of Surah Quraysh and summary of Surah Ma'un, and as well as the references. References we had done in our previous classes. And in our last class on Thursday, we had learned about the question and answers of this lesson. Today, what we will do today? Today we will do one word answers on the board. Then we will start section poetry. Okay. One lesson is going to complete today with one word answers. We will complete this lesson. Inshallah, we will proceed towards the poetry section. Poem number 1 we will study. Okay. Let me write the heading first. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Here he is asking you, this one word answers will be asked in the final exam as well. There is a particular section for one word answers, carries 5 marks. Ajib anil as'ilatil atiya bi kalimatin wahida. Answer the following questions in one word. Now you have to answer the question in one word, need not to write the complete sentence answer. Okay, you have to give just one word answer would be enough for this section. Here what he is asking you, Halish Shaitanu Yuvasvisu fi sudurin nas. Is the shaitan whispers into the hearts of human beings? Is the shaitan whispers into the hearts of human beings? What would be the answer? Answer is yes. So what we have to write? We have to write Noon, Ain, Mim, Naam. Yes. Answer is over. You will get 1 mark for it. Okay. क्या शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है? हलिश शैतानु युवस्विसु फी सुदूरिन नास. क्या शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है? तो क्या आंसर क्या होगा? जवाब क्या होगा? जवाब ये है कि हाँ, डालता है. तो हमको लिखना है नाम, अरबी में लिखना है नून आइन मीम नाम. और ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि हल के जवाब में नाम लिखना होता है. लेकिन बाज़ मरतबा आपको नफ़ी में भी जवाब देना होता है ला, नो कहकर. वो ज़रा ख्याल रखना, जो नो आंसर आने वाला है उसको आप ख्याल से वो करना. Now the second answer, second question is, Hal Suratul Falaqi Makkiyatun. Is Surah Al-Falaq revealed in Makkah? So here in the textbook, it is given that Surah Falaq revealed in Medina. So now the 2 possible answers are here. The one possible answer is yes, Naam, yes, it is revealed in Makkah. The other possible answer is La, no. Okay, because in the reader it is given it was revealed in Medina. So both the answers will be correct for this question. Don't worry if any reader, any guide you are seeing, if answer is written La, don't get confused. Both the answers are right, both the answers are correct. You will get 1 mark for writing either of the answer. Either one of the answer. Hal Suratul Falaqi Makkiyatun. Is Surah Falaq revealed in Makkah? क्या सूरह फलक मक्के में नाजिल हुई? तो इसके दो जवाबात हो सकते हैं. पहला जवाब यह है कि हाँ, यह मक्के में नाजिल हुई, सबक हो गया, आंसर हो गया. लेकिन दूसरा जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि रीडर में ये दिया है आपके
ये टेक्स्ट बुक में ये है कि ये मदीने में नाजिल हुई। तो अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप ला लिखेंगे नो तो भी आंसर सही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ऐना नज़लत सूरतुल माऊन, where did surah al maun reveal? Where did surah al maun reveal? सूरे माउन कहाँ नाजिल हुई? What would be the answer? What is your answer? Tell me. Yes, your answer is right. It was revealed in Makkah. So we have to write fi Makkah. One word answer means you may use two words also. It is not restricted to the one word itself. You may give two word answer or three word answers as well. Okay. Here fi Makkah, if you add fi, no marks will be deducted because the answer goes in two words. Fi and Makkah, two words are there. You will get 1 mark for it. If you don't write fi, no problem will raise. Just write Makkah. You will get marks. Okay. आइना नज़लत सूरतुल माउन, सूरे माउन कहाँ नाजिल हुई? तो एक लफ्ज़ में आपको जवाब देना है, तो आप कहेंगे मक्का, मक्के में। मक्के में बोलेंगे तो दो लफ्ज़ हो जा रहे हैं, ऐसा दो लफ्ज़ में भी दिए तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप फ़ी मक्का लिखिए, इन मक्का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, कम आयतन फ़ी सूरतिल कुरैश, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन सूरा अल कुरैश? सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? तो ये सूरह कुरैश जो है 4 आयतों पर मुश्तमिल है। कुरान में 2 ही ऐसे सूरह हैं जो 4 आयतें रखते हैं, एक है सूरह कुरैश और दूसरा है सूरह कुल वल्लाहु अहद, ठीक है, यानी कि सूरह इखलास। कम आयतन फ़ी सूरतिल कुरैश, सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन सूरा कुरैश? द आंसर विल बी अरबाउ आयातिन, अरबाउ आयातिन, 4 वर्सेस, 1 word answer is over, 4 आयतें हैं, that's all. Now the last question, फी अय्यी सूरतिन जाआ ज़िक्रुश शिताई वस्सैफ, in which surah the seasons, the winter and summer season is mentioned? In which surah the winter and summer season is mentioned? So in which surah it is mentioned? It is mentioned in Surah Al-Quraysh. Okay. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. So in Surah Quraysh it is mentioned. So we will write Fi Surah Quraysh, or you may directly write Quraysh और सूरतुल कुरैश, आंसर वुड बी करेक्ट। फ़ी अय्यी सूरतिन, किस सूरे में, जा ज़िक्रुश शिताई व सैफ, सरमा और गर्मा का जिक्र आया। कौन से सूरे में सरमा और गर्मा का जिक्र आया? कौन से सूरे में आया? सूरे माऊन में, माफ़ कीजिएगा, सूरे कुरैश में आया। ये आपको लिखना है। यहाँ तक आप मेरे साथ आ गए? So with this lesson has been completed. This lesson has completed. I will write these all 5 questions on the board. You may take the screenshot. Later you may copy it down in your notebook. Then if the time permits, if the time remains, we will proceed towards section poetry. Poem number 1, Alhamdu. Okay. Section poetry, poem number 1, Alhamdu, we will start, if the time permits. Otherwise, we will stop the class with the one word answers itself. Okay. I have divided the board into two halves. Now I will write the questions here. Take it down, write it down, or take the snapshot of it. After writing the questions on the board, I will read for you. You may repeat the same with me. 5th section,
Ajib, Ajib, answer. Ajib, answer. An, Ajib, an, answer. Anil As'ila, answer the questions. As'ila, answer the As'ilatan. Answer Anil As'ilati, answer the questions. Al-Atiya, following. Al-Atiya means following. Following. Bi kalimatin wahida, in one word. Bi kalimatin wahida. Okay. Bi kalimatin wahida, in one word. Is the board clear? Okay. It looks clear. Ajib, answer Anil As'ilatil Atiya, the following questions, bi kalimatin wahida, in one word. Bi kalimatin wahida. गोलते के साथ है ये यहाँ पर से ऊपर से लिख लीजिए, bi kalimatin wahida. ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए. ये क्या पूछ रहा है बोले तो, हलिश शैतानु युवस्विसु फी सुदूरिन नास. हल अश्शैतानु, हल अश्शैतानु is the shaitan, is the satan or devil. Hal ash-shaytanu yuvasvisu whispers fi sudurin nas, fi in sudur hearts. Actually, literally it means chests, but here, according to the text, we are translating sudur as hearts. Fi sudurin nas. Does shaitan whisper in the hearts of human beings? Does shaitan whispers in the hearts of human beings? What would be the answer? The answer is yes, na'am. That's all. Because these are one-word answers. One word would be enough for the answer. Are you able to see the board clearly? I shall increase the font of the font size. Okay. So that the board may clear more clearer. Here, second question. Hal suratul falaqi makkiyatun. Hal suratul falaqi. Hal suratul falaqi makkiyatun. Hal suratul falaqi makkiyatun. Is surah falaq revealed in Makkah? The answers are, if you write no, the answer is correct. Nahi. Or the answer would be naam as well. Naam is also correct, yes. Both the answers are correct. Write either one of the answer. Hal suratul falaqi makkiyatun? La. Answer is over. Hal suratul falaqi makkiyatun? Yes. Naam. Don't write both the answers.
Prefer one of the two. Okay. Prefer writing la or prefer writing na. Don't write both the answers. Okay. This is over. Now question number 3C. Aina nazalat suratul maun. Aina nazalat suratul maun. Aina means where. It is not mirror, which we called in Urdu. Aina, where. Aina nazalat, Aina nazalat, where did, which surah? Suratul Maun. Aina nazalat? Suratul Maun. Where did Surah Maun reveal? Surah Maun कहाँ नाजिल हुई? जवाब. You have to answer in one word. Aina nazalat Suratul Maun. Where did Surah Maun reveal? Fi Makkah. In Makkah. It is revealed in Makkah. It means it is revealed in Makkah. मक्किया हो गया वो. मक्का लिखना है अपने को. Suratul Maun revealed in Mim Kaf Golte, Makkah. Got it? Now come this side. Right. Now here, question number 4, D. Kam ayatan fi suratil Quraysh? Kam, how many? Ayatan, verses. Kam ayatan fi suratil Quraysh. Kam ayatan fi suratil Quraysh. How many verses are there in Surah Al-Quraysh? Okay. How many verses are there in Surah Al-Quraysh? How many verses contains, or you may translate this as Kam ayatan, how many verses Surah Quraysh contains? Answer would be Arba'u. Arba'u ayat. Arba'u ayatin. How many verses Surah Quraysh contains? 4 verses. How many verses? 4 verses. सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं. कितनी हैं? 4. चौथा जवाब हो गया. अब है लास्ट 5th वन, ई. फी अय्यि सूरतिन जा जिक्रु शिताई वस्सैफ. फी अय्यि सूरतिन, फी अय्यि सूरतिन, in which surah जाआ जिक्रू अश्शिताई शिताई वस्सैफ. In which surah winter and summer seasons are mentioned? In which surah winter and summer seasons are mentioned?
In which surah winter and summer seasons are mentioned? Answer. In which surah it is mentioned? They are mentioned in Surah Quraysh. Fi Suratul Quraysh, or you may directly write Suratul Quraysh. Suratul Quraysh. End of first lesson. Here, this is the end of lesson number 1 from section prose. Inshallah, after few minutes, we will start section poetry, poem number 1. Take the snapshot and write it down in your notebook. I will read once again for you. With translation, I will read. If you want to take down the translation, you may take it down. Here we will go. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ajib anil as'ilatil atiya bi kalimatin wahida. Answer the following questions in one word. Question number A. Hal ash-shaytanu yuwaswisu fi sudurin nas. Does shaitan whisper into the hearts of human being? Does shaitan whisper into the hearts of human being? Answer is yes, na'am. Second question. Hal suratul falaqi makkiyatun. Hal suratul falaqi makkiyatun. Is Surah Falaq revealed in Makkah? Is Surah Falaq revealed in Makkah? Answer is la, no. Or the second answer is na'am, yes. Both the answers are right. Third question. Aina nazalat Suratul Ma'un. Where did Surah Ma'un reveal? Where did Surah Ma'un reveal? Answer is fi Makkah, in Makkah. Next question. Kam ayatan fi Suratil Quraysh. Kam ayatan fi Suratil Quraysh. How many verses are there in Surah Al-Quraysh? How many verses Surah Quraysh contain? How many verses Surah Quraysh contains? Answer, Arba'u ayatin, 4 verses. Arba'u ayatin. Last question. Fi ayyi suratin ja'a dhikru shita'i was saif. Fi ayyi suratin, in which surah, ja'a dhikru shita'i was saif, season, the winter and summer seasons are mentioned. In which surah? Suratul Quraysh, in Surah Quraysh. Fi Suratul Quraysh, you may write the answer as Fi Suratul Quraysh or Suratul Quraysh. End of lesson 1 from section prose. Got it? If you carry any doubt, if you have any doubt, please raise your hand and ask us. If not, then we will start lesson, another lesson. Okay, Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas want to ask something. Sir, hello? Walaikum assalam. जी, हेलो जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? मटेरियल अवेलेबल है बोल रहे हैं? नहीं, इट इज इन द प्रेस, अभी आने वाला है, अभी नहीं आया है अरबिक का मटेरियल। आए तो आपको फोन करके इन्फॉर्म करेंगे, आके ले जाइए बोल के, फिक्र मत कीजिए। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। और कौन है भाई? यहाँ पर हम लेसन नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। आज हमारा लेसन नंबर 1 सेक्शन प्रोज से दूसरे कोई सबक हम नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एक लेसन कंप्लीट हुआ है अब तक।
अब कल से या फिर जो है अभी ये क्लास में अभी टाइम है, इंशाल्लाह सेक्शन पोएट्री हम शुरू करेंगे। ओके। मोहम्मद इलियास साहब ने पूछा था कि अरबिक, क्या अरबिक का मटेरियल क्या, तो अभी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि अरबिक मटेरियल अभी नहीं आया है, इट इज़ इन द प्रेस, ये आएगा, आपको फ़ोन करके बताया जाएगा कि अरबिक मटेरियल आ गया है, आपकी अमानत हमारे पास रखी हुई है, आके ले जाइए, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन पोएट्री लेसन नंबर 1, पोएम नंबर 1। ओके, section poetry, poem number 1. You may see the lesson as well here. Alhamdu. What is the name of the poem? The poem's name is Alhamdu. Alhamdu, the praise, tarif. First line, Allahu Jalla Sha'nuhu. Allahu Jalla Sha'nuhu. Allah, His rank is great in respect. अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है। Here, the first line continues. Lahu as-sifatul baqiyatu. His attributes, his qualities are ever remaining. He has ever remaining qualities. उसके सिफात हमेशा रहने वाले हैं। Got it? Line number 1 is over. This poem contains 5 lines. First line is Allahu Jalla Sha'nuhu. Allah, His rank is great in respect. Lahu Sifatul Baqiyatu. He has ever remaining qualities. हमेशा रहने वाले सिफात हैं उसके, हमारे जैसा नहीं। रब्बुस समाई वल अराजी. Allah is the Lord of skies and the earths. Wal miyahi al jariya. Wal miyahil jariya. It means, and the Lord of running water. Running water means flowing water, like rivers. So the translation will become, Allah is the Lord of the skies, the earths, and the running water means the rivers. अल्लाह ताला परवरदिगार है ज़मीनों का, आसमानों का और बहते पानी का। अल्लाह ताला परवरदिगार है ज़मीनों का, आसमानों का और बहते पानी का। Got it? Next. Here you see line number 3. وَيَبْسُرُ بَصَرَ يَبْسُرُ وَيَبْسُرُ النَّمْلَةَ فِي جَنْحِ اللَّيَالِي الدَّاجِيَةِ وَيَبْسُرُ النَّمْلَةَ. He يَبْسُرُ النَّمْلَةَ, he sees the ant. Okay, he sees. وَيَبْسُرُ النَّمْلَةَ. This line number 3. وَيَبْسُرُ النَّمْلَةَ, he sees the ant. فِي جَنْحِ اللَّيَالِي الدَّاجِيَةِ, in the extreme darkness of night. Allah subhanahu wa ta'ala sees the ant in the
extreme darkness of night. Just we are translating the lines, later we will explain it. Okay, next line. Muqtadirun. He is all powerful. Muqtadirun, he is all powerful. Zu rahmatin, and all merciful. Wa akhidum bin nasiya, he could hold the forehead for punishment. Okay, wa akhidum bin nasiya, he could hold the forehead for punishment, means Allah subhanahu wa ta'ala is powerful, all powerful, and also merciful. He could punish anyone if he wants, or he could forgive anyone whom he wants. Next. Fakhsha min Allah. So, fear Allah. Alladhi ya'lamu kulla khafiya. Who knows every hidden word and work. Who knows every hidden word and work. This is the translation. Okay. Translation is over. Allahu Jalla Sha'nuhu. What is the name of the poem? The poem name is Alhamdu, the praise. Okay. Allahu Jalla Sha'nuhu. Allah, his rank is high in respect. Lahu Sifatul Baqiyatu. He has ever remaining qualities. Rabbus Samai wal Arazi wal Miyahil Jariyati. He is the Lord of, means Allah is the Lord of the earths, the heavens, and the flowing water, means rivers. Yabsurun namlata, he sees the ant, he witnessed the ant, he sees the ant. Fi janhil layli dajiyati. Fi janhil layali dajiyati. He sees the ant in the extreme darkness of night. Muqtadirun, all powerful. Zu rahmatin, all merciful. Wa akhidum bin nasiya, he could hold the forehead for punishment. He could hold the forehead for punishment. Fakhsha min Allah, so fear Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ya'lamu, who knows kulla khafiyatin, every hidden. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala knows every hidden words, every hidden acts, and Allah subhanahu wa ta'ala knows every hidden, kulla khafiyatin, every hidden word. Allah subhanahu wa ta'ala knows the secrets. No one can, what we can say, Alladhi ya'lamu kulla khafiya, who knows every secret. He is powerful to see what's going into the hearts of the human being. Okay. He is all powerful and all merciful. Okay, what we will do? Okay, we will stop here with the translation. Inshallah, we will do the explanation in our next class. Listen the translation in Urdu. Alhamdu, tamam तारीफ. अल्लाह जल्ला शानुहु, अल्लाह ताला की शान बहुत निराली और बड़ी है. लहु सिफातुल बाक़ियतु, उसके सिफात हमेशा रहने वाले हैं. हम देखते हैं हमारी बीनाई कमज़ोर होते रहती है, लेकिन अल्लाह ताला की बीनाई कमज़ोर नहीं होती. वो हमेशा देखता है, हमेशा से देख रहा है. रब्बुस समाई वल अराज़ी, वो परवरदिगार है आसमानों का, ज़मीनों का और बहते पानी का. मतलब ये है कि वो सारी कायनात का परवरदिगार है. चाहे ज़मीन पर बसते हों, या फिर आसमान में बसने वाले हों, या फिर पानी में बसने वाले जानवर हों, सबका वो परवरदिगार है. वह यबसुरुन नमलता, वो देखता है चूंटी को. चूंटी एक बहुत ही छोटी मखलूक है जो नज़र नहीं आती दूर से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा है, ऐसा क़ादिर मुतलक़ है कि वो चूंटी को देखता है. रात के
घनघोर अंधेरे में, रात, काली रात में अल्लाह ताला जो है चींटी को देखता है, न सिर्फ देखता है बल्कि उसके चलने की आहट को भी सुनता है। चींटी के चलने की आहट भी सुनता है, बोल रहा हूं मैं। जी हाँ। मुख्तदिरुन, ऑल पावरफुल, ज़ू रहमतिन, हाँ मुख्तदिरुन क़ादिर मुतलक है, रहम वाला है, वाखिदुम मिन नासिया, और पेशानी के बल घसीट के सज़ा देने वाला है। तो ये सिफत जो है पेशानी के बल घसीटने की, सर के बल घसीटने की, ये क्या है, फरिश्तों को हुक्म होता है कोई बंदे को दोज़ख में लेके जाओ बोल के, तो चल मियाँ दोज़ख में बोले तो कोई भी कहीं को आएगा। दोज़ख में क्या जो है पिकनिक स्पॉट समझ रहे हैं दोज़ख को, चलो खुशी खुशी जाने के लिए, ऐसा नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता। तो बंदे जो है ना डरेंगे और नहीं जाना चाहेंगे, तो उनके पैरों को पकड़ के पेशानी के बल, यानी सर नीचे लगड़ा जाएगा और पैर उनके पकड़ के खींच के ले जाके दोज़ख में फेंकेंगे। तो ये सिफत को अल्लाह ताला यहाँ पर ये पोएम में बयान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है शायर बयान कर रहा है कि वाहिद बिन नासिया, अल्लाह ताला जो है पेशानी के बल घसीट के दोज़ख में ढकलने के लिए जो है ना क़ादिर मुतलक है। फ़ख्शा मिन अल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी यालमु कुल्ला ख़ाफ़िया, जो हर पोशीदा चीज़ को जानता है, हर पोशीदा राज जानता है। जो कुछ तुम छुपाते हो, जो सामने जाहिर करते हो, जो जाहिर करते हो, जो जाहिर नहीं करते हो, सबका जानने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह से डरो। ये ट्रांसलेशन हम यहाँ पर रोकते हैं। वी विल क्लोज आवर क्लास हियर इंशाल्लाह। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will continue with the section poetry, its summary and explanation of the verses, if the time permits, question and answers. Okay, thank you. Now we will close our class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.